हमरी करो हाथ दरचा पूर्ण होए चित्त की इच्छा हमरी करो हाथ दरचा पूर्ण होए चित्त की इच्छा पूर्ण होए चित्त की पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हाथ दे मोरे बचाओ सुखी बसै मोरो परिवारा सब करतारा मोर चानिज कर दे करिए आज तुम्हारिया पूर्ण होए हमारी आशा भजन की रहे प्यासा पूर्ण पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा वाहे गुरु 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 और भजन की रहे प्यासा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाद कोई अवर ना त्याऊं जो मैं चाहूं तुम दे पाऊं तुम्हें शाद कोई अवर ना त्याऊं जो मैं चाहूं तुम दे पाऊं 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 हर संतन की दूरे मौको कर संतन की दूरे कर संतन की दूरे मौको कर
अवर कोई रखे जैसे हम सतगुर लिए छड़ाए वाहिगुरु जी मैं तुझ बिन बेली को नहीं बेली को नहीं तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही मेरे परवारे सब जियो तू मेरे प्राण सहारे तू मेरे प्राण सहारे जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकारख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन सरे सटे सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अरवालम। वाहिगुरु जी, at times I am angry and at times I overcome this anger. This consistent war going on inside me is like you creating and destroying worlds. As cells fight each other and my feelings change inside, I see this as worlds being created and destroyed. Everything only calms down when my mind merges back with you, with your Gurbani ji. आप जी सब कुछ बनाਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਦੈਂਤ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਧਰਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਰਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। Here's another note, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮੇਟਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਕਰਖ ਕਰਦੇ ਹੋ। So कबीर तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू जब आकारख करत हो कब हूँ जदों कदी आप जी। So a person that's following the path of bhakti, prema bhakti, when after the third round of marriage, at the fourth round of marriage, when the malap happens after the virag, jab akarkh kart ho kab hu, when you decide to pull back, Maharaj, when you pull someone's hangta back, you destroy their hangta, you take out their ego, that parda kat ke pat ki jane, that antara, that vakpuna, that they're different than Vaheguru, and that smaying that happens within Vaheguru. Jab akarkh karto ho kab hu tum main milt deh tar sab hu, then those aap ji de pyare bhakt, they come within you, they become one with you. Jo jalam hai jalo ai khatana. I mean, so that's just a little note there. I'm sure that vichar can get much deeper, but we were just discussing that in Sangat Roop, and that vichar came out of that. So I just wanted to add that little note there. But yeah, I mean, it's beautiful, man. Like, you flow so many ways. Mara Kirpa. All right, so let's pull out our notebooks, or if we're doing it online, and let's get to writing. आपो आपनी बुद्ध है जेती
बारनत भिन्न भिन्न तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बेदे सजा प्रथम संसारा। आपो, आपो अपनी बुद्ध है जीती। So for आप we would go, we would write आपो, आपो अपनी। So आपो अपनी, आपो अपनी। बुद्ध, बुद्ध we would write as मत। है is है। जेती, here jeti is in the form of a ginati, jinni, as much, है ना, like a measurement, right? I'll write that out. Jitni, so in the form of minati de vich, है ना। So in English, apo apni, they themselves. Bodh is understanding, you know, what are you gonna call it, wisdom. But yeah, like ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ, their understanding ਹੈ is jeti, how much. In the form, this is a reference to a measurement. Okay. आपो अपनी बुद्ध है जेती, जितनी भी। बारनाथ, बारनाथ means बोलना, बारनाथ बोलते, कहते, वखाणदे, वखाउंदे, वखाण करदे, वखाणदे। भिन्न, भिन्न means वखरे। तोहे, आप, जी, नु, तेती, तेती, in the reference to people that do it, तेती, ओहो लोग, ओहो। So Barnat is to speak, utter. Pin, pin, different. Pin, once again, different. Tohe, you. Teti, so those people. Give you guys a quick 10 seconds, 15 seconds to write some of that out, and we'll get into the translation. Interpretation, I guess, but yeah. So जिन्नी भी लोकां दी आपो अपनी बुद्ध आ, जिन्नी क भी बुद्ध आ, जिन्नी क भी मत आ लोकां दी. So as each has their own understanding for the first part. As each has their own understanding. आपो अपनी बुद्ध है जेती ਬਾਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹ 33 ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ
They speak of you in different ways. As each has their own understanding, they speak of you in different ways according to their mata. Barnata pen tohe. So tohe barnata pen. Kon teti. Those. So wait about a minute here. Apo apuni bodhe hai jeti Bharanat pen tohe teti. Va tomara lakha न जाए पसारा केह वेद सजा प्रथम संसारा तुमरा आपजीदा. Lakha means to understand. समझया. ना नहीं जाए जांदा पसारा. पसारा फैलाओ. Expansion. We just did this recently as well. Okay, so tomra, your, lakha, gauge, understand, not know or not, jai, go. Literally, jai means to go. Pasara, expansion. So, what do we mean by expansion? Everything. Stuff that we probably don't even know beyond our capacity of intellect, I'm assuming. But creation. Tumra abjida your lakha samjaya to gauge, to understand, not nahi jai janda to go pasara expansion. Can't go there, can't understand this pasara. We'll come back to that. Kehe bede. Kehe bede. Kesa. Kesa. Kesa vedanala. Veda means jugati. Jugti means tarika. Saja. Banaya. Sajaya. Kidna sajaya. Kidna banaya. Pratham. Pratham means pahla. Pahla. Sansara. Sansar. Keha. Which. Vede. Technique. Saja. Adorned. Sajaya. Pratham, first. Sansara, world.
I can see some of you guys today. That's so cool. Nice. Well, I get that. Tumra lakha na jaye pasara. The expansion of your creation cannot be understood. Tumra lakha na jaye pasara. The expansion of your creation cannot be understood. Tumra lakha na jaye pasara. आप जी दा फैलाओ, आप जी दा पसारिया, आप जी दा पसारा जेड़ा आ वो समझिया नहीं जाता महाराज। आप जी दा पसारा समझिया नहीं जाता। आप जी दा जो भी आप जी ने रचिया वो समझिया नहीं जाता। I was listening to this like 1 minute clip today. They're talking about black hole, and then there's this new. It's not a there. It's not a theory yet, but they're just talking about it. Inside a black hole, there's another black hole, and if they can just sort of hold that open a bit, then they can reach that black hole. And I was just like, my God, like, what's happening here, man? Tumra lakha na jaye pasara. Yeah, man, that's it. I don't, yeah. Tumra lakha na jaye pasara. It's beautiful the way science is moving, trying to learn these things. Pretty cool. Saja pratham sansara. As to how you first adorn the world. ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਵੇ ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ? How did you do this? ਕਹਿ ਵੇਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ। ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ? As to how you first adorned the world, the expansion of your creation cannot be gauged, cannot be understood. Antananta sada beanta kahan nanak ucha ucha. Sahib mera neet nawa. Playing on that side. ਤੁਹਾਡੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਪ ਕਰਦੀ ਆ, like it has this ਬੰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਂ ਹੀ by their own sort of knowledge. Even the wind, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੱਛੀਆਂ, like all everything ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਵੇਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ। All right, should we move on? सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बादशाह। एक है रूप अनूप स्वरूपा, एक है रूप अनूप स्वरूपा। Yeah, man, like, yeah, what are you gonna say? रंग पे जो राव कहीं भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुरे रच दीनी। एक है रूप अनूप स्वरूपा, एक है इको महाराज जी, इको रूप मीन्स स्वरूप, अनूप
उपमा तो रहता. Anup also means sundar. But Noop upama रहता. उपमा तो रहता. Sarupa Sreshth. So Sreshth Sarupa. So one form, Anup, beyond praise, beautiful. Sarupa, so great or utmost form. Gurbani translates Gurbani, man. Ekarup Anup Sarupa. Rank is a Pekhari. 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 Peyo, Hoy, Rav, So. I had a hard time understanding this, but Rav means someone that's rich, in the sense that it's a status. It's a status of someone that's rich to the level of richness. So they just say rich. So we'll say Amir, but we'll write Amiran di ek padavi. Right? Kehi kadi Pupa is a raja. Ranka, Pekhari, beggar. Happen. Payo, happen. Rav. So a status given to someone who is rich. So particularly in Rajputs, in the Maharashtra area. They're also called Sardars. You can call them Sardars as well. So it's a status symbol given to those who are rich. Kehi. Sometimes Pupa king or big king. Raja Pupa king. एक है रूप अनूप स्वरूपा. You have महाराज थोड़ा एक कोई स्वरूप आ तो उपमा तो रहते आ. महाराज थोड़ा एको जेड़ा स्वरूप बहुत सुंदर आ. महाराज जेड़े थोड़ा स्वरूप आ वो उपमा तो रहते आ.
You have one Sarup form that is beyond praise. Your one form is beyond praise, is beautiful. This has been translated, for you guys' knowledge, in the sense that you are one yet have countless forms. Ekarup anup sarupa. But I couldn't personally, I don't know, maybe you guys can look, but I couldn't find how anup would be translated into many. I'm probably wrong, but like we searched, I couldn't find it. But certain people have done that translation. You have one yet you are one yet have countless forms. But I don't know. I doubt it. I don't see it. If you guys know, you guys can shoot me out a reference. Appreciate it. But legit, me, you are one that is beyond praise. Eka roop anup sarupa. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਆ now what is that ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ I guess at different times is different like you know I mean maybe during Guru Gobind Singh Ji's time maybe you know Sikhs used to say that to look at Maharaj in that light maybe now certain people might be doing abhyas and they're doing that to a Guru Granth Sahib Ji. Maybe certain people, Baba Harnam Singh Ji and them, they're looking at the Prakash Roop, the ultimate Prakash, the one. Sorry, sorry, maybe it's that. You guys decide. Rank pejo rav kahi pupa. Sometimes you're a beggar, a rich person, or a king. ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ This reminds me of like Akal Ostata. Like, you know, Guru Gobind Singh Ji writing to Akal Purakh, Maharaj, you are this and this and this and this and this and lists off like, oh my God, it's beautiful. एक है रूप अनूप स्वरूपा रंग भेजो राव कहीं भूपा कदी आप जी रंग बन जाते हो कदी आप जी राव अमीर बन जाते हो कदी आप जी भूपा राजे बन जाते हो पर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ We'll take about a minute to write that out. महाराज सत्ता बख्शण में है च नहीं रहना चाहिए यार ना संगत जी don't live in fear man look what you guys have look at this man don't ever get into fear you guys too big for fear man अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी अंडज
क्या गुरमुखी आंडियां तो पैदा होए अंडज आंडियां तो पैदा होए. Let's do that in English as well. So birth from egg. So anything born from an egg. Andaj. Okay. Anything born from an egg. Andaj. Jeraj. Kok. Jeraj womb. So birth from a womb. से ताजा मुड़के तो या पसीने तो मुड़के तो या पसीने तो पैदा होए. So birth from secretion. Examples: sweat, filth. यो जानना मैं जो बनवान तो सो होवत बेस्टा का ज्ञान तो. Birth from secretion, sweat, filth. Yeah, Kini did, Kiti have made. Kiti. So andaj, andya to from egg. Jeraj, cock, birth from a womb. Jeraj, mudke to secretion like sweat, filth. Kini, kiti, dead. Utapoj. बीज तो पैदा होए. So birth from a seed. Khane is the method of birth. So andaj, jeraj, setaj, utpoj, these are the khane that Maharaj is talking about. जिस तरह पैदा होए, जिस तरीके नाल पैदा होए आ. Bohore means fair, mudke, or fair. Rache means racha or bana. Dini is diti. Bohore, bohore, rare now. Then, bohore, then, rache, create. Dini, give.
literally means to give. So it's probably easier to translate both these lines together. Arth would be, so you created methods of birth through eggs, womb, sweat, and then seeds. So आप जी ने खानियां रचियां अंडियां तो कुख तो मुड़के तो ते बीज तो आप जी ने पैदाइश पैदा की है. So you created methods of birth through eggs, womb, sweat, or secretion, and then seeds. Andaj, Jairaj from the womb, Setaj, secretion, sweat, etc. Uttapuj, seeds. Like apples and things, I guess. I'm sorry. Dry humor. Uttapuj Khan and Bahore Rachiti. All right, guys. So that was that. Ekarupa, Anupasarupa. Okay. ताको कर पाहन अनुमाना तो महामोड़ का जो पेड़ ना जाना था महादेव का शास्त्र कार का चीन तो नहीं प्रेम. Let me put it up there, 2, 3. Ikarupa, Anupasarupa. Allah Khan Ajay Pasara. Eh वजह से जब प्रथम सारा Ikarupa, Anupasarupa. रंग पे यो राव कहीं पूपा. Andaj, Jay Raja se tajkini Uttapuj Khan and Bahore Rachini. All right, so guys, so now we'll sing this for a bit. So when we first sing it, put your concentration in the translations. Try to understand what it means. What's it mean to you? And then we'll move on from there. Amrit Kaur, you? Oh, yes. Bless. आपो आपनी बुद्ध है जेती वर्णत पेन पेन तोह तेती. आपो आपनी बुद्ध है जेती बरनत पेन पेन तोहे तेती. तुमरा लखा न जाए पसारा कह वेद सजा प्रथम संसारा. तुमरा लखा न जाए पसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा.